Thank you. So, a very good morning. Good morning, sir. And I hope whatever I taught you in the last, you know it. And only those also who are saying that इस भागदौड़ की जिंदगी में आगे कैसे पढ़ा जाए, उनको भी पता होगा कि कैसे पढ़ा जाए. So today's is open access publishing, online resource to check publishers' copyright and self-archiving policies. There are various publishers in the world, those who have their own policies of self-archiving as well as copyright. So what do you understand by the copyright? Any idea? Any one of you, those who know what is copyright? Copyright is my personal agreement with the permission of myself. One can see or download my message. Anybody else? So whatever we are publishing or whatever it's the thing which is ours is cannot be taken by any other person. That is a copyright. And nobody can copy our without research papers or without any permission. So it's a copyright. So do you think it is only for the research papers and publications? That's everything. Everything. What everything? Art, music, like movies, like films, like whatever in any business. Any whatever has been, whatever is in the is intellectual and that is without permission. If you take it, it is the copyright violation. So in most of your day-to-day activities, every day we go for the copyright violation. How? कोई भी song download कर लेते हैं, push हो जाता है. That is copyright violation. So now so this is copyright is a right given by the law to creators of literary, dramatic, musical and artistic works and producers of cinematograph films and sounds and recordings. Anything, whatever we publish in any form, it is a copyright. And the copyright belongs to the creator, copyright belongs to the producer of that particular thing, whether it is photograph, whether it is. So it is a bundle of rights including inter alia, rights of reproduction, communication to the public, adaptation and translation of the work. Suppose this slide which I have right now, this belongs to me. It belongs to me. And if you want to use this and if you download it, it is a copyright violation. So it is the copyright ensures certain minimum safeguards of the rights of the creator over their creations, thereby protecting and rewarding creativity. What does it mean by rewarding creativity? It means if you have created something and it has been protected by the Copyright Act, it means whenever somebody downloads it, whenever somebody copies it and you file a case and you have been protected. So it means आपको reward मिलता है कि आपने जो किया था उसको जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, उन्होंने उसको अपहेल्ड किया कि नहीं, दिस इज गुड, ये आपका राइट है, इट इज योर राइट. सो आपकी जो वो है क्रिएटिविटी है उसको रिवॉर्ड मिला, नॉट इन द सेंस ऑफ मनी बट इन द सेंस ऑफ प्रेज, इन द सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि नहीं भाई ये इन्हीं का है, लेट इट बी विद हिम और विद हर. Then the protection provides by copyright to the efforts of writers, artists, designers, dramatists, musicians, architects, and producers of sound recordings, cinematograph films, and computer software creates an atmosphere conducive to creativity, which induces them to create more and more, motivates others to create. It means जब copyright होता है, then हमको ये लगता है कि हाँ yes,
दिस इज समथिंग विच इज प्रोटेक्टेड. अदर्स भी कहते हैं चलो हम भी इसी तरह से कुछ बनाते हैं, इट विल बी प्रोटेक्टेड, इट विल नॉट बी कॉपीराइट. तो कॉपीराइट देयर इज एन एक्ट. ये एक्ट कब आया, कैसे आया? एनी आइडिया व्हेन दिस एक्ट वाज? नो. सो if you go to this, the Copyright Act was introduced in 1957. बहुत पहले की बात है, 1957 में. उसमें क्या था, और ये it came into effect in January 1958. 1957 में इसको एक्ट को बनाया गया और इसको जनवरी के 1958 से लागू कर दिया गया. And after that there were some amendments. You know what is amendments? Yes. To add certain acts, to add certain points in already existing acts. तो उसमें 1983, 1984, 1992, 1994, 99 and 2012. The 2012 act is a more significant act. इसमें शायद आप लोग को न याद हो, जावेद अख्तर, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि इसमें कॉपीराइट एक्ट होता है सॉन्ग राइटर्स का, और कॉपीराइट ले जाते हैं सिंगर्स, म्यूजिशियंस ले जाते हैं, और होता है राइटर का, जो राइटर लिखता है. तो जावेद अख्तर ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे, लेकिन उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, सिंपली कह दिया जाता था जावेद अख्तर का गाना है. लेकिन जब वो रेडियो पे बजता था तो जो रॉयल्टी होती ना, यू नो द रॉयल्टी, एनी टाइम एनी म्यूजिक एनीथिंग व्हिच इज प्लेड ऑन द रेडियो, उसका रॉयल्टी का पैसा उस सिंगर को, म्यूजिशियन को दिया जाता है. दैट इज द रीजन लता मंगेशकर और वेरी वेल्दी पर्सन, उनके गाने बहुत बजते थे, सब उनको मिलता था. 5 बार बजेंगे दिन में 5 बार रॉयल्टी मिलेगी, 6 बार बजेंगे 6 बार मिलेगी. So that was one of the reasons for this copyright. The Copyright Amendment Act 2012 is the most substantial. इसमें क्या हुआ था, to protect the music and film industry and address its concern. उन लोग के थे कि जिसको देखो वो इसको डाउनलोड कर लेता है, जो उसको देखो वो बजा लेता है, कोई कॉलर ट्यून बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो what is this? So we should be given the royalty or we should be protected by this. So they have protected it. To address the concern of the physically disabled and to protect the interest of the author of any work, incidental changes to remove operational facilities and enforcement of rights. कुछ इसमें ये भी ऐड किया गया कि जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उन्होंने भी तो कुछ किया होगा. जरूरी नहीं है कि जो एबल लोग हैं वही कुछ करें, फिजिकल डिसेबल्ड लोग भी कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं. कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई कुछ होता है. उस सबको 2012 के एक्ट में ऐड किया गया, so that their rights can be protected. Some of the important amendments to the Copyright Act are an extension of copyright protection in the digital environment, such as penalties for circumvention of the technological protection measures and right management information. कुछ क्या होते थे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक का भी इसमें ऐड किया गया 2012 वाले. इसमें जो यूट्यूब है और भी चैनल्स हैं, इंस्टा है, ये है, उन सब को उसमें ऐड किया गया है, सो दैट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. The introduction of statutory licenses for cover versions of the broadcasting organization, ensuring the right to receive royalties for authors and music composers, exclusive economic and moral rights to performers. जो परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे भी कोई कुछ परफॉर्म करता है, उसको भी कॉपीराइट के उसमें रखा गया है. पहले क्या होता था, किसी ने भी कुछ कर दिया, कोई जाके स्टेज पे कुछ भी बोल आया, स्टेज पे जाके कोई भी काम कर दिया, उसकी कोई वो नहीं. अब वो दोबारा आप नहीं कर सकते. अभी आपने कुछ दिन पहले पेपर में न्यूज पढ़ी होगी कि नहीं, आई डोंट नो इट, देयर वाज ए केस, उसमें एक वर्ड था झकास, मालूम है क्या है इसमें? कुछ केस बताओ क्या है, व्हाट इज दैट? एनीबॉडी? यहाँ जितने लोग बैठे हैं
बताइए ये क्या है? मैं बोल रहा हूं फिर से, एक छोटा सा वर्ड है झकास, इसका क्या हुआ था? व्हाट वाज दैट? एनीबॉडी बताइए। हैं? कुछ पढ़ा था, कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद है जरा जरा है। झकास एक वर्ड है जो एक फिल्म पर्सनालिटी है। अनिल कपूर। अनिल कपूर बोलते थे, अब उनका वो कॉपीराइट एक्ट हो गया है। कोई आदमी उसको झकास को नहीं बोल सकता, उस लहजे में नहीं बोल सकता है जिस लहजे में अनिल कपूर ने बोला है। तो छोटी छोटी बातें भी कॉपीराइट होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉपीराइट में बहुत कुछ आता है, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीसेंट एग्जांपल ऑफ ए कॉपीराइट वायलेशन। बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स ने उसको यूज कर लिया। इसी तरह से अमिताभ बच्चन की लैंग्वेज में कुछ धन्यवाद देवियों सज्जनों, वो भी मना हो गया कि आप उनको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो रिसेंट केस है, वो कोर्ट का डिसीजन जो है वो अनिल कपूर की झकास पे है। सो आई थिंक कॉपीराइट एक्ट का आप ये समझ सकते होंगे कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉपीराइट। तो इसका स्कोप क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजेस, जो हम लोग बहुत करते हैं। 5 रुपए देते हैं, किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं, उससे कहते हैं फिल्म डाउनलोड करो, एंड वी आर सो हैप्पी दैट ले आए। We are very lenient. Copyright, what we think here, it is our right to copy. It is our right to copy. Otherwise, it is not our right. We are bound to. That is the reason in library we are not able to photocopy each and everything. We don't photocopy because we are bound to protect. उसमें लिखा होता ना कि these, किसी भी किताब को देखेंगे उठा के उसमें लिखा होगा कॉपीराइट, अगर आप इसको you cannot copy it, you cannot store it, you cannot share it, so we don't copy it. एक दो पेज कॉपी कर देंगे, कर लेते हैं, लेकिन we cannot copy from one to last page. So that is the problem with this. So copyright does not ordinarily protect titles by themselves or names. जो नेम है, कॉपीराइट डज नॉट ऑर्डिनरी प्रोटेक्ट्स टाइटल्स बाय देमसेल्फ। कोई टाइटल है उसको कॉपीराइट नहीं प्रोटेक्ट करता है, कोई दो वर्ड के कॉम्बिनेशन को भी कॉपीराइट नहीं प्रोटेक्ट करता है। स्लोगन्स हैं, शॉर्ट फ्रेजेस हैं, मेथड्स, प्लॉट्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट आइडियाज एंड कांसेप्ट्स। कॉपीराइट जो है किसी आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है। सपोज सम ऑफ यू हैव गिवन एन आइडिया कि चलो युवा में चल के कॉफी पीते हैं, ये आइडिया है, तो कोई भी कह सकता है चलो चल के पी सकते हैं, तो दिस इज नॉट द प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर आप कोई वो बना लेते हैं, प्रोसीजर बना लेते हैं लिख के कि वी विल डू दिस, अदर विल आल्सो राइट लाइक दिस, तो जो पहले लिखेगा कॉपीराइट उसके हाथ में होगा, उस सेकंड वाले के हाथ में नहीं होगा। सो दिस इज अनदर थिंग। So copyright does not protect ideas or concept. To get the protection of copyright work, it must be original. आपको copyright का हक तभी मिलेगा जब आपका work is original. It is not copied from anywhere. Got it? Acquisition of copyright is automatic and it does not require any formality. What does it mean? It means whenever you write a paper, whenever you write anything, copyright is with you. आपको फाइल नहीं करना है किसी उसमें कंपनी में जाके, फॉर्म नहीं भरना है, nothing. The moment your paper is there, the copyright is with you. You don't have to go to anywhere. Simply, जैसे ही अब ये मैंने स्लाइड बनाई, इसका कॉपीराइट मेरे पास हो गया।
हम यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बना है, उसमें नीचे कॉपीराइट लिखा रहता है, कॉपीराइट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। इट डज नॉट मीन कि वी हैव गॉन समवेयर, सम एजेंसी, किसी एजेंसी पे गए, उनसे कहा कि हमें कॉपीराइट चाहिए, so they don't give. So you simply, the moment your paper, your article is ready, copyright is with you. That is the reason when you write a paper and send it for the publication, the publisher asks you to transfer your copyright. आप उसमें लिखते हैं कि कॉपीराइट हम पब्लिशर को दे रहे हैं, फिर आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, फिर पब्लिशर से ही लोग परमिशन मांगेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे। आप देख लीजिए, जब अभी आप लिखेंगे, जब अपनी पीएचडी लिखेंगे, तो आप अपना कॉपीराइट ट्रांसफर करते हैं यूनिवर्सिटी को। You will transfer the copyright of your thesis to the university, not yourself. You will no longer be the copyright holder of your thesis. उसमें लिखा होगा, आपको फॉर्म भरना होगा, साइन करके देना होगा। आप कह सकते हैं हमारी थीसिस है, हमारा सब कुछ है, लेकिन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द यूनिवर्सिटी। Copyright come into existence as soon as the work is created and no formality is required to be completed for acquiring a copyright. However, the certificate of registration of copyright and the entries made therein serve as prima facie evidence in the court of law. अगर आपने कोई कॉपीराइट कोई चीज करवा ली है, उस कॉपीराइट को if you will get it registered in a court, then you can say it is my copyright act. Otherwise आपको वो भी कहीं dispute हो जाएगा। अगर if there is a dispute, somebody say it is my copyright, somebody will say it is my copyright, then you can show I have already been registration of the copyright act. जैसे आजकल कई जगह भी समस्या हो रही है, कई चीजों का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है आपको, whether it is marriage, whether it is date of birth, whatever it is. अगर आपके पास courts approved paper है, तभी वो मान्य होते हैं, otherwise they don't create it. So that is, so it is required only when you consider or when you think there may be some legal problem later on, so you get your copyright registered in a court of law. So what are the rights of a copyright owner? A copyright owner has the following rights in the copyrighted work. Produce the work in public. जो कुछ भी आप बना रहे हैं, you can produce it into the public. You can publish the work. You can perform the work in public. है ना, चाहे वीरदास हो या और कोई भी हो, anybody can come on the stage and perform that. Translate the work. Whatever your work is there, you can also translate it. That can be translated. Then make a cinematograph film or a record of the work. जो आपने काम किया है उसकी आप फिल्म भी बना सकते हैं, उसका सिनेमेटोग्राफ भी कर सकते हैं. Then you can broadcast the work. आप उसको broadcast भी कर सकते हैं. Then you can make an adaptation of your work. Suppose आपने कोई story लिखी, you have written some story, and you want that story to be adopted in a dance sequence. उसको उस स्टोरी को डांस सीक्वेंस में अडॉप्ट कर लिया, देन यू आर अलाउड, इट इज योर ओन वर्क. उसी चीज को आप ड्रामे में अडॉप्ट कर सकते हैं. तो यू आर अलाउड टू डू ऑल दोस थिंग एज यू हैव द ओनर ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट होल्डर ऑफ द पर्टिकुलर थिंग. देन यू कैन मेक कॉपीज ऑफ द वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट देम. अब आप लोग खुश हो गए ना? Now this is the thing. ये है ना, ये खुशी की बात होगी ना. I can make the copies and distribute among them. आप लोग को मिल सकता है ये, क्योंकि ये हमारा है, हम दे सकते हैं. लेकिन अभी शाकिर जो यहाँ खड़े थे वो आके देते हैं, वो नहीं. This one prevents others from unauthorized usage of copyrighted work. और जो दूसरे लोग हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कि आप ये you cannot have the copyright
Since you don't have copyright, you cannot distribute it, you cannot give it to anybody else. So these are the few things in the copyright. So आया समझ में? Yes. If you have any question, you are most welcome to ask right now. Otherwise, we will go ahead. Okay. तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी होता है. There is copyright infringement. What is this? Copies of the copyrighted work are made for hire and sale without authority or permission, such as online piracy. ये काम बहुत होता है जब कोई भी नई फिल्म आने वाली होती है. सबसे पहले उसको कहीं डार्क वेब पे कहीं वो अवेलेबल हो जाती है. लीक जिसको आप लोग कहते हो ना कि लीक हो गई, वो ये होता है. तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है. देन infringing copies are distributed for personal and trade gains. आपने को मिल गई कहीं से कॉपी बढ़िया सी किसी फिल्म की, डंकी की मिल गई फॉर एग्जांपल, आपने जल्दी जल्दी अपने पूरे क्लास को बांट दी, फिल्म आपको मिल गई है. सो दिस इज infringement of copyright. Then copyright work is performed in a public place. कोई भी copyright work ऑलरेडी है और उसको आप किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं. So what happens? Some time back at IIM Lucknow, they plan to hold films on Saturdays and Sundays. सैटरडे और संडे को अपने एम्प्लॉइज के लिए फिल्म दिखाएंगे. तो वीसीआर के जमाने में होता था, सीडी आई, सीडी लगा दी और पिक्चर को जैसे यहाँ पे हो रहा दिखा दिया, सब लोगों ने देख लिया उसको. वो किसी ने शिकायत की ये होता है तो वो मना हो गया. अब क्या हुआ, वहाँ जैसे पिक्चर में होता नहीं है कि डायरेक्ट रिलीज होती है वहाँ फिल्म, और वो डायरेक्ट दिखाते हैं. वो सीडी पे नहीं दिखा सकते. जैसे हम लोग सीडी लाते हैं, बहुत सी जगह सीडी में फिल्म आती थी पहले, अभी भी आती है, और लोग घर में बैठ के प्राइवेट तो देख रहे हैं, अगर आपने पब्लिक में देखा उसको और पैसे लिए तो इट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. यू कैन नॉट डू दिस. पब्लिक इन्फ्रिंजिंग कॉपीज आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया. कॉपी करके आप ले आए इंडिया में, उसको इंपोर्ट कर लिया. दिस इज आल्सो अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फ्रिंजिंग कॉपीज एंड प्रोड्यूसर टू द ओनर. ओनर को नहीं पता और आपने उसकी पब्लिक एग्जीबिशन कर दी. दिस इज आल्सो infringement. Reproduction of a dramatic, literary, artistic or musical work other than in the form of cinematograph film, creating a recording embodying the copyrighted sound recording. जैसे आजकल एक वो चल गया है ना, कोई भी छोटा सा वीडियो बना लेते हैं टिकटॉक दिस एंड दैट, उसके पीछे म्यूजिक चलती रहती है. दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट. अगर कोई पीछे पड़ जाए आपके कि आपने हमारी म्यूजिक को अपने टिकटॉक के वीडियो के पीछे लगा लिया है, तो हो सकता है बहुत सारा पैसा देना पड़ जाए. ये भी हो सकता है कि कोई सजा हो, कुछ हो, नथिंग, वी डोंट नो. जो भी उसमें वो मांगेगा, जो भी जज डिसाइड करेंगे वो होगा उसके. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आगे फ्यूचर में, अभी तो नहीं, अभी तो बन गया, जो कुछ हो गया नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे कॉपी ऑफ द सिनेमेटोग्राफी फिल्म की भी कॉपी करना ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है. सो देयर आर वेरियस. कभी कभी होता ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. यू नो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. अगर आप ये कहें हमको ये नहीं पता था कि ये वन वे टू वे है, वो कहेगा आपकी सब कुछ नहीं पता है. यू आर इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज. इसीलिए आपको नहीं पता था कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी कर ली तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ you may be punished. Anyway, let us go ahead. Examples of infringement: when someone downloads movies from an unauthorized source, it will be copyright infringement. कहीं से भी कोई डाउनलोड कर लेता है तो वो copyright infringement में आता है. इसी तरह से when a person uses television serial clip in a YouTube video without giving credit and publishes the serial clip on YouTube, it amounts to copyright infringement. हम
हम लोग को नहीं पता इतना, खास करके यहाँ हिंदुस्तान में, या खास करके हम उन लोगों को जिनको इस बात का ख्याल ही नहीं रहता है कि हमको कॉपीराइट हम ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। When someone uses a song's music as background music in his or her song, it results in copyright infringement. जो मैंने अभी बताया था, ये वही चीज है ना। अब देखिए, A.R. रहमान, टी सीरीज, कोलावरी डे एंड मेरे सुर मेरा तुम्हारा, ये 4 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको। A.R. रहमान ने क्या किया है? वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड कंपोजर A.R. रहमान हैज सक्सेसफुली copyrighted numerous compositions. This legal protection has enabled him to license his music for international projects, including Hollywood films and Broadway musicals, thereby earning royalties and global recognitions. उन्होंने क्या किया है? A.R. रहमान has copyrighted all his compositions. फिर वो हॉलीवुड को भी देते हैं, वो ब्रॉडवे म्यूजिकल को भी देते हैं, और उससे हैंडसम कमाई करते हैं। उनकी म्यूजिक को कोई भी कहीं यूज नहीं कर सकता है प्रॉपर्ली unless and until they have purchased it. Then T series युग डोमिनेंस। T series ने क्या किया है? T series, a music and film production company, has successfully copyrighted a vast variety of songs. जितने भी songs हैं, बहुत से ज्यादा songs, almost 90% or so, उन्होंने उसका copyright purchase कर लिया है। और आप जब भी YouTube पे जाएंगे, कोई गाना सुनेंगे, उसमें T series लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी फिल्म का हो, whether it is of any film, but you will find it in the T series. So they are earning a lot of money. T series is earning a lot of money, and this has allowed them to monetize their content on platforms like YouTube, where they are one of the most subscribed channels globally. पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा उनका चैनल सब्सक्राइब किया जाता है, क्योंकि हर आदमी को गाना सुनने का शौक है। अब इसी तरह से और भी बहुत से चैनल अब आ गए हैं जिन्होंने परचेज कर रखे हैं, वो आपको मिलेगा। देन कोलावरी डे सॉन्ग, इसमें क्या हुआ था? दिस वायरल सॉन्ग फेस्ड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ पायरेसी एंड अनऑथराइज्ड रीमिक्सेस। लोगों ने उसको रिमिक्स कर दिया। होल्डिंग ए कॉपीराइट अलाउड द क्रिएटर्स टू टेक लीगल एक्शन, रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ इंफ्रिंजिंग कंटेंट एंड द पेमेंट ऑफ डैमेजेस। जब उसको बताया गया कि हमारा ये कॉपीराइट एक्ट है, ये हमारा ओरिजिनल है, और लोगों ने उसको रिमिक्स कर लिया, किसी ने उसको कुछ और कर दिया, बाद में उनके ऊपर केस हुआ, और केस होने के बाद उनको पेमेंट करना पड़ा बहुत सारा। तो दिस इज अनदर इज मिले मेरा सुर तुम्हारा, जो एक है ना मेरा तुम्हारा, ये भी बहुत आता था टीवी पे इधर उधर सब कुछ। इसमें भी दी आइकॉनिक सॉन्ग मिले सुर मेरा तुम्हारा वाज रीमेड विदाउट परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल क्रिएटर्स। जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे उनसे परमिशन नहीं ली गई, उसको घुमा फिरा के पेश किया गया। उससे क्या हुआ? द ensuing legal battle highlighted the importance of copyright in protecting the integrity of the work. फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट में केस चला और ये साबित किया गया कि कॉपीराइटेड वर्क है, ये हमारा है। मेरे सुर मेरा तुम्हारा वो तो अनदर थिंग, लेकिन दिस सॉन्ग इज माइन, ये मेरा है, तो आप इसको इधर उधर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये 4 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, और देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ पे स्टार लगाया है, एस्ट्रिक लगाया है ना ये, और नीचे मैंने सोर्स का नाम लिखा है कि मैं ये कहाँ से लाया हूँ, ताकि मैं प्लेजरिज्म से बच सकूं और कॉपीराइट एक्ट से बच सकूं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी ठीक। नाउ moving forward, self archiving, there is something which is known as self archiving. What is that? Self archiving is the act of the author depositing a free copy of electronic document online to provide open access to it. आप अपने कहीं भी अपना गूगल ड्राइव पे सेव कर लीजिए,
उसका लिंक किसी को आप भेज सकते हैं, ये गूगल ड्राइव पे है या और भी किसी जो सेल्फ आर्काइविंग प्लेसेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन सेव देयर। ई प्रिंट्स होता है, डी स्पेस होता है, बहुत से हैं, ग्रीन स्टोन है, बहुत से डिजिटल रिपोजिटरी के साइट्स हैं वेयर यू कैन save your paper and you can distribute it. The term usually refers to the self-archiving of peer-reviewed research journal and conference article as well as thesis and book chapters deposited in the author's institutional repository or an open archive to maximize its accessibility. ये self-archiving और institutional repository. Somebody was asking the old question papers of this यूनिवर्सिटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कहाँ मिलेंगे पीएचडी के और भी लोगों के, तो वो हम लोगों ने एक रिपोजिटरी बनाई है, उस रिपोजिटरी में वो पेपर पढ़े, आप वहां से उसको निकाल सकते हैं, इट इज देयर। सो सेल्फ आर्काइविंग हमारे पेपर थे, हमने उसको, हमारे मींस यूनिवर्सिटी के पेपर थे, हमने अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनल साइट पे उसको सेव रखा है, एक्सटर्नल वो अवेलेबल नहीं है, nobody can access it from external, anybody can access it from internal. Okay, so shall I move ahead? शेरपा रोमियो, ये रोमियो जूलियट नहीं है, you know what is this? Sherpa Romeo is an online resource that aggregates and presents publisher and journal access policies from around the world. If you want to know what is the policy of a particular journal, वो journal की policy क्या है, then you can access this Sherpa Romeo. ये आपको बताएंगे every registered publisher or journal held in Romeo is carefully reviewed and analyzed by a specialist team who provides, summarizes and self-archiving permissions and condition of rights given to authors on a journal by journal basis while whenever it is possible. होता क्या है कि suppose you want to give it your article to a particular journal and you don't know what is their policy, वो क्या करेंगे हमारे जर्नल को, हमको परमिशन देंगे, अपने पास रखेंगे, whatever they will do it, you don't know. So you go to Sherpa and they will let you know कि इस particular journal की क्या policies है for copyright and for self archive. So this is a screenshot of that Sherpa Romeo. इसमें क्या है कि you can search, there are two search terms here, by the name of journal or by the name of publisher. So you can search it. Suppose you want to search it in a particular journal, you write it in the journal and click search, it will give you some result. Or if you want to know कि ये Wiley publisher, Elsevier publisher, उसकी क्या policies है, you can click these two things. You can also go by titles and all, so many things are there, but I will show you this. So suppose you can also search by the country, किस country में कितने publishers हैं जो शेरपा रोमियो पे listed हैं, उनकी क्या position है, इसमें सब लिखा हुआ है पूरा. Then कंट्री में आप ए पे क्लिक करेंगे तो ए से पब्लिश होने वाले जितने भी आर्टिकल पब्लिशर हैं वो आ जाएंगे. पहला तो इंडिया से ए टू जेड जर्नल्स है, वो इंडिया से पब्लिश होता है, उसके बारे में. देन नेक्स्ट थिंग इज दिस पब्लिकेशन फ्रॉम ए टू जेड जर्नल्स. जब आप ए टू जेड जर्नल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड सो मेनी जर्नल्स देयर इनसाइड दैट पब्लिशर इज पब्लिशिंग दीज मेनी जर्नल्स. उसी किसी एक भी जर्नल पे आप क्लिक करेंगे then you will know what is their policy. ये मैंने एक पे क्लिक किया, उसमें लिखा हुआ रहा है पब्लिकेशन की पॉलिसी क्या है और उनकी इन पब्लिकेशन की इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है. इसमें if you will see it here,
दिखाई नहीं दे रहा ज्यादा। इसमें लिखा है जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश होता है। नीचे लिखा है कि इसमें देयर इज नो एम्बार्गो, एवरीथिंग इज रिटन ओवर। इसमें एम्बार्गो नहीं होता है। एम्बार्गो मैंने उस दिन बताया था क्या होता है। So there are some useful journal finder tools. Journal finder tools. Suppose आपको कहीं एक आर्टिकल लिखना है, आपको ये नहीं पता है कि हम इसको किस जर्नल में भेजें। This is the main problem you are facing. You are writing a paper. You know how to write a paper, and after writing a paper, then you are in the confused order. Where should I send this paper? इस पेपर को हम कहाँ भेजेंगे, पब्लिश हो जाएगा? Yes, sir. This is the big problem. Because there are many papers, many journals which can accept your paper. There are many, and आपको ऐसा लगेगा, suppose you are writing on cell biology, something. अब आपने सोचा है कि सेल बायोलॉजी में पता चला कि 50 जर्नल्स आते हैं उसमें, किस वाले को हम दें? This is another problem. Whom should I give it this? Then you go to their policies. वो बताएंगे कि इसमें कितने दिन में हम पब्लिश एक्सेप्ट करते हैं, इसमें हमारी पॉलिसी क्या है, सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसी क्या है, everything they will let you know. So finding the right journal is one of the most important parts of disseminating your research. ठीक है, अभी क्लासरूम में बैठे से नहीं होता है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप चाहेंगे कि हमारी रिसर्च disseminate हो, others should also know it. Suppose you have finished writing your research manuscript and need to choose a suitable target journal to submit your paper. पता नहीं चलता है कि हम कौन से पेपर में कहें। यहाँ तो सुपरवाइजर कह देंगे कि इस कॉर्पस में ढूंढो, इस कॉर्पस में आपको जो जर्नल होते हैं वो दूसरी तरह के होंगे, सपोज कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। So there are other ways you can solve. Sorry. However, you are unsure which journal would be best fit for your research work. ये भी एक बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। Submitting a manuscript to an unsuitable journal is one of the most common mistake made by authors. आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि पेपर हमने लिख दिया है और भेज भी दिया इसको प्रिंट होने के लिए। बाद में पता चला, अरे तुमने इसको कहाँ भेज दिया था, तो बहुत बेकार वाला जर्नल था। Why you have sent it here? Why not you have sent it in that journal? तब आप कहेंगे हमको पता नहीं कि which journal I should send it. तो उसके लिए given the enormous number of scholarly journals around, it is hard to shortlist possible reputed journals for your research paper. बहुत मुश्किल काम होता है कि where to send your paper for publishing in a journal. So for that, Journal Finder tool is useful online resource that helps researchers locate relevant academic journals for publishing their research articles. Okay. These tools typically ask for a specific information about the research, such as keyword, title, abstract, and subject area to provide a list of potential journals that match the criteria. कुछ journals finder हैं, वो आपसे कहेंगे कि टाइटल लिख दीजिए, कुछ कहेंगे कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी लिखिए, so that I can match कि which journal is the best suited for you. तो उसके लिए थोड़े से एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक है जेन है जर्नल ऑथर नेम एस्टिमेटर। ये एस्टिमेट करेगा, जर्नल ऑथर नेम एस्टिमेटर compares the title and abstract of your article research with millions of others in PubMed. You know what is PubMed? Actually, PubMed is a database of medical journals. PubMed is a database of medical journals where it has millions and millions of journals and articles, which will help you to decide कि आपका पेपर इसमें छप सकता है कि नहीं. Another is Think, Check, Submit. Think, Check, Submit is a campaign to help academic researchers trusted journals for their research and identify their trusted journals. आप इसके साइट पे
Then there is a journal guide. Journal guide is a free handy tool that lets you evaluate scholarly journals. Then another thing is DOAJ. ये उस दिन मैंने आपको बताया था, Directory of Open Access Journals. If you are looking only for free access journal, then there are also ways of searching these by filtering your search result through journal comparison tools. You will be able to, if you use any one of them, you will be able to see which journal is best fit for your research paper. So there is another Elsevier Journal Finder. Elsevier Journal Finder lets you find scholarly journals that would be best suited for publishing your research article. Then Nature Springer Nature Journal Suggester. ये suggest करेगा कि which journal is good for you. Then IEEE Publication Recommender. It is also a good source where you can look for a best journal for your paper. So ये है journal finder, Elsevier का journal finder है. इसमें there are two things. One is this paper title, other is paper abstract. पेपर का आपका टाइटल क्या है और आपका पेपर का एब्स्ट्रैक्ट क्या है. टाइटल यू कैन इग्नोर बट एब्स्ट्रैक्ट इज आप उसको उसमें लिखिए. देन व्हाट यू विल फाइंड, मैंने इसमें लिखा था, टाइटल में लिखा था, वहां से दिख रहा होगा, आई डोंट नो, यूजर सैटिस्फैक्शन विद मेडिकल लाइब्रेरीज. यूजर सैटिस्फैक्शन विद मेडिकल लाइब्रेरीज में के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूजर सैटिस्फैक्शन क्या है. फिर यह है कि दिस पेपर डिस्कसेस द सर्विसेज ऑफ मेडिकल लाइब्रेरीज. सिर्फ दो चीजें लिखी थी इसमें कि यूजर सैटिस्फैक्शन ऑफ द मेडिकल लाइब्रेरीज, मेडिकल लाइब्रेरी से यूजर कितने सेटिस्फाइड है, और उस पेपर में ये लिखा था कि दिस डिस्कसेस द अबाउट द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द मेडिकल लाइब्रेरी. सो उसके बाद जब इसको फाइंड द जर्नल्स क्लिक किया तो इसमें हमको एक जर्नल की लिस्ट मिली. सबसे पहले आया द जर्नल ऑफ लाइब्रेरी, जर्नल ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप. इसमें पूरा आया कि यू कैन सेंड दिस पेपर इनटू दिस, लेकिन इसमें दो नीचे दो चीजें लिखी, दिस एंड दिस, दैट इज ओपन एक्सेस and no publishing charge. and another is no publishing. Open access जो है वो gold open access है, और it is saying it is asking for $3,000 something for publishing your paper. तो अगर जिसे कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा, सब पे पैसा इसी में लगा देगा, तो फिर अपना फीस कैसे जमा करेगा, क्या करेगा. Then another thing is no publishing charges. वो भी है उसी जर्नल में नो पब्लिशिंग चार्जेस है, लेकिन एम्बार्गो है. एम्बार्गो उसमें लगा हुआ है, वो 6 महीने बाद वो आएगा सामने, 5 महीने बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, नोबडी नोस इट. सो यहाँ पे गोल्ड पब्लिशिंग और ग्रीन पब्लिशिंग और ब्रॉन्ज पब्लिशिंग वो सब यहाँ पे इसी एक ही जर्नल में आ गए, वॉट एवर इट इज. तो इसने सजेस्ट कर दिया, एक रिजल्ट दे दिया कि हाउ मेनी जर्नल्स आर देयर. ये एक ही जर्नल की हमने स्क्रीनशॉट लिया, बहुत से जर्नल्स आ गए थे उसमें. टू एक्सप्लेन टू यू, आई हैव जस्ट टेकन वन स्क्रीनशॉट फ्रॉम द Elsevier जर्नल फाइंडर. ओके, आ गया समझ में? Yes. जेन जो है द जर्नल ऑथर नेम एस्टिमेटर is a free online bioinformatics tool that allows you to plug in some information on the topics of a manuscript that you are working on. It is basically useful for the people, those who are working in the medical field. Jane compares
your inputted text to Medline. Medline is also a database of journals, medical conferences, and all those. So Medline, ultimately returning as its product a list of suggested journal titles that you may want to consider submitting your work for publication. आप जब मिडलाइन से वो कंपेयर करता है and then it gives you an estimated number of journals. You can send your articles in these many journals. Other uses of this search interface include identifying potential reviewers. उसमें ये भी लिखा होता है कि कौन-कौन से इसमें reviewer हैं. It may be inappropriate candidate for reviewing an article for a particular topic and locating the related papers worthy of citing in your manuscript. It was created in 2007 and maintained by Martin Schumann, एक है जिन्होंने इसको create किया. The moment you will log in to this, एक window आएगी. There will be a window like this, and साइड में लिखा होगा वेलकम टू जेन, नीचे लिखा होगा फाइंड जर्नल्स, फाइंड आर्टिकल, एवरीथिंग. सो इन दिस विंडो, सर्च विंडो, यू टाइप whatever you are searching for that. So इसमें मैंने लिखा है COVID-19 ऊपर. When I have written COVID-19, it has given me these many, बहुत से जर्नल हैं, हमने थोड़ा सा इसमें जर्नल को आपको दिखाया है. And you see there are orange, blue and green, three important colors are there. So what does this mean? जो orange नंबर है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है this journal does not charge readers or their institution for access. It is considered to be high of quality. जो orange है. फिर ये blue है, PMC लिखा हुआ है. इसमें लिखा है some of the articles of the journals are deposited in pub medical center. ये पूरा वो बता देगा कि ये कहाँ पे है, ये क्या है, कैसे है. Then you will also find green. ग्रीन में लिखा हुआ है this journal is currently indexed in Medline, so was reviewed by NLM. NLM मतलब National Library of Medicines. और फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आर्टिकल इन्फ्लुएंस. इसमें इस आर्टिकल का कितना इन्फ्लुएंस है वो भी आपको पता चलेगा इसमें. Then उसमें if you go back, इसमें लिखा है articles. उस article पे show articles लिखा है. When you click on the articles, it will show you कि यहाँ पे कुछ articles हैं already जो इस type के articles हैं. So how you will search? It is through Jane. I think it is clear to you. तो जेन के थ्रू आप इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं. इट इज ओनली फॉर द मेडिकल जर्नल्स. Yes. Those who are doing research in some medical, they can search through this. So this was all from my side. If you have any question, you are most welcome. If you have any questions, you are most welcome. By this unit, this RPE04 is completed. Any question, anything? Attendance sheet नहीं आई अभी. Any question? हाँ, yes. उसको अभी आपने बताया था कि एलिजिबल जर्नल फाइंडर में ड्रॉ ज्यादा है और कौन सा बेटर होता है, किसमें
देखिए, it depends on your capacity. If you are able to pay that much, and if you want your research to be available immediately to anybody, so you can go for gold open. उसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ आपको वो होगा. But if you don't have that much of money with you, go for open access, but green or bronze something. गोल्ड में होता है कि इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है, वो आपसे पैसे लेते हैं, इमीडिएटली पैसे लेंगे और वो अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी. और बाकी उसमें पैसे नहीं लेंगे, लेकिन उसमें एम्बार्गो होता है. सपोज दिस इज दिसंबर, यू हैव गिवन इट टू, इट मे अपीयर इन द मार्च और अप्रैल समवेयर. तब तक आपकी रिसर्च अधूरी रहेगी, क्योंकि आरटीसी हो चुकी होगी. आप गजाली साहब को बता नहीं पाएंगे कि आपका एक पेपर छप चुका है, वहां फंस जाएगा वापस, है ना? हाँ, यस. सर, बोर्ड मेंबरशिप में पीयर रिव्यूज नहीं होते? देयर इज नो मेंबरशिप काइंड ऑफ थिंग. देयर इज एन ऑप्शन. जैसे आप जब फिल्म देखने जाते हैं या रेल का या जहाज का सफर करते हैं, तो उसमें अलग अलग किराया होता है. एग्जीक्यूटिव लेंगे तो आराम से बैठेंगे, इकोनॉमी क्लास का लेंगे तो किनारे बैठेंगे, समथिंग लाइक दैट. इसी तरह से गोल्ड में का जो है, इफ यू आर विलिंग टू गिव दैट मच ऑफ मनी to publisher to publish your paper in gold, you give that money, वो आपका छाप देंगे पेपर और वो immediately available हो जाएगा. Then problem is this, why and how much money you will spend in the paper for the publishing. आपको बार बार पब्लिश करना है किसी ना किसी उसमें, क्योंकि as long as your PhD work is going on, you are supposed to get published in those few papers. जिंदगी की जद्दोजहद के साथ क्यों? अब देखिए जद्दोजहद तेजी का दिखाई दी, तो उसमें आपको पब्लिश करना ही करना है. तो कोशिश ये कीजिए कि जो प्रिंट जर्नल्स होते हैं, गोल्ड और वो सब छोड़ के जो प्रिंट जर्नल होते हैं उसमें भेजिए अपने पेपर. वो कम उसमें होते हैं और वो लेकिन टाइम लगता है. ये किसका है मोबाइल? तो कोशिश ये कीजिए उसमें भेजिए. आइडिया तो अभी हमने दिया है. आइडिया जब आप आर्टिकल नहीं, उसमें पॉलिसी होगी, उसमें पॉलिसी होगी, उसमें पॉलिसी होगी कि वो गोल्ड पब्लिश कर रहे हैं, उसमें पॉलिसी होगी कि वो पैसा लेके पब्लिश कर रहे हैं. एवरीथिंग विल बी देयर. यू हैव टू टेक ए वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन कंसल्टेशन विद योर सुपरवाइजर, क्योंकि आपका कोई भी पेपर विदाउट सुपरवाइजर के हो नहीं पाएगा. आपको उसमें लिखना ही है, आपने एक दो लोगों को ऐड करना होगा. तो जो भी को ऑथर्स हैं उन सब के साथ मिलके आपको वो काम करना होगा. एंड देन यू आस्क व्हिच इज द बेस्ट सूटेड जर्नल फॉर यू, उसमें भेज दीजिए. हाँ, यस Sir, as you told that there are plenty of options available to publish the papers. यस. Now, what should be the basic criteria to select which paper is good for us or not? Which paper or which journal is good? Sir, journal. That one. There are two things. Number one, what is your subject area? आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है, आपको वो देखना होगा. सपोज यू आर आपका किस उसमें है रिसर्च? मैकेनिकल. So you know in mechanical engineering there are certain journals, कुछ जर्नल जो होंगे कहे जाते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट जर्नल, उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है. You know what is impact factor? Roughly, we know we can listen from you. Roughly you know? What is roughly? What do you know roughly? Roughly means kind of citation that if journal receive from last 2 years publications.
Based on that, we calculate the impact factor. Yes. So through that you can know which journal is good journal. But the problem is this. So what is the demarcation line? Demarcation line, I tell you. The demarcation line is this. You go to and see their policies also. No, in terms of the citation, in terms of impact factor, Uh, what is the impact factor we consider good? there are, if you see, Yeah. there are impact factor of 2, 3, 4, 5, 7, 8. Yeah. The impact factor is more. The journal is more. The cutoff. Cutoff, there is no cutoff. No cutoff. There is no cutoff. As high as you can go. But the moment you go for as high as journal, as impact factor, it will be very difficult for you to get your publication published in that. Generally, what type of Generally, what you do, Yeah. which journal has an impact factor of not very high, a kind of so-so impact factor, you send your article first in that paper. So means 2. 0.25, for example. Okay. 0.25 is also acceptable. The impact factor is there at least. Okay. There are certain papers which have no impact factor. So criterion is that it should have the impact. It should have an impact factor. When there is an impact factor, you have submitted your paper, it has published. The moment your paper is published, and 2 or 3 people, or 4 or 5 people have cited your paper, your chances has become more in getting some good journal. अगर आपका जर्नल साइट ही नहीं हो रहा है, तो when your journal is cited somewhere, or your journal is cited with 4, 5, 6 and 8 people, then publisher will contact you. कि आपका, जैसे हमारे वाइस चांसलर सर हैं यहाँ पे, he has the highest impact factor. उनका जो H index है बहुत ही ज्यादा है, शायद ही किसी का इतना हो यहाँ पे. उनका जो H index है, is a very high H index. तो उनसे पब्लिशर, उनसे जर्नल पब्लिशर, they will ask you कि kindly send us your paper to us, we will publish it. तो आपको पहले अपनी वो बढ़ानी पड़ेगी, साइटेशन बढ़ाना पड़ेगा. वो साइटेशन तभी बढ़ेगा जब आप कुछ गोल्ड में पब्लिश करवा देंगे, कुछ डिपॉजिटरी पर डाल देंगे, आपके पेपर को लोग साइट करने लगे. The moment your paper is cited, the moment your paper is available to others, and they know you how best or how good you are writing, they will certainly contact you. तो हमको भेज दीजिए. That is the reason, and that is the way. इसीलिए आप देखेंगे बहुत, there are many articles where you will find 8 or 9 people writing one paper. उसमें से एक author ऐसा होगा जो बहुत ही important author होगा, जो बड़े बड़े जर्नल्स में उसके पेपर आते होंगे, उसके साथ मिलके कोलैबोरेट करके आप लिखिए, you will also be considered as a good author और आपका उसमें छप जाएगा. तो ये सब चीजें कुछ स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है. Anybody else? और किसी को कुछ पूछना? नहीं पूछना है? So next question, sir, what is the expected date of the examination? This I will also ask you. You allow us, you ask any question. You are most welcome. And the same question I am asking you. Whenever you get the expected date, let me know. So we are on the same platform? Yes, we are on the same platform, but I am standing here, you are sitting there. That is the difference between you and me. Otherwise, we are on the same platform. You are also learning, I am also learning. Both are the learners here. Thank you. तो ये जो एग्जामिनेशन होता है, जो कुछ भी होता है, ये COE यहाँ से डिसाइड होता है. हम लोग को भी नहीं पता चलता है, लिस्ट आ जाती है कि ये एग्जामिनेशन की शेड्यूल बन गया है. हाँ, हम बस ये बता देते हैं कि हमारे क्लासेस खत्म हो गए, कोर्स कंप्लीट हो गया. That is it. So this is the last class. Not. No, 5 and 6. There are 2 more units. Units 5 and 6. Tomorrow will be unit 5. RPE 05. And then we will have 2 more classes, I suppose. I think
3 क्लासेस और होंगे, उसमें सब फाइनल हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? आप बताइए, आपकी भाग दौड़ की जिंदगी कैसी चल रही है? सही चल रही है? ओह, अब कैसी है?